हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची आज सेशन रे। तो सेशन लाइव कि नहीं चेक करदा, ऑडियो वगैरह सब लाइव आसूची ना नहीं ये चेक करदा। ओके, तो ऑडियो क्लियर ना ऑडियो आसुंदे पिला माने ऑडियो अच्छा एबे बोधे ऑडियो क्लियर हेतिबो ना ओके। तो पिला माने मतलब जे आज ये क्वालिटी सहित ही सेशन कंप्लीट करिया पड़ियो। तथे मु मझे मझे ट्राई करथबी ऑडियो क्वालिटी टिके भलो करिया पे ट्राई करथबी ऑडियो क्वालिटी टिके भलो करिया पे। ओके तो पिला ने जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन करिया। तो पिला ने जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ। वेलकम वेलकम पिला माने समस्त को वेलकम वेलकम वेलकम। ओके पिला माने तो डेरी करियानी पिला ने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दबा। तो आशा करछि आपण माने समस्ते सेशन को जॉइन कर देइथिबे पिला माने। तबे चलंतु अब डेरी न करी पिला माने आज सेशन स्टार्ट करिबा। तो पिला माने आज सेशन रे आमे डिस्कशन करिबा टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन। वन सेकंड मु कहूची टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्वेश्चन हला से कमिटी कमीशन वाला क्वेश्चन नो। एते टीचिंग एप्टीट्यूड रो किछि क्वेश्चन रहइबो, पेडागोजी रो किछि क्वेश्चन रहइबो पिला माने। ठीक अछि, अंदर हमर कोन कहली टीचिंग एप्टीट्यूड एवं पेडागोजी क्वेश्चन पिला माने किछि क्वेश्चन तुमको नुआ लागि पारे हला आराम से क्वेश्चन सीखि नबो। एवं किछि क्वेश्चन तमरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम रे आगुरु भी आसीची। त माने एई सेशन पिला माने अटेंड करले तम करिवो कोन कोन ना ओल्ड क्वेश्चन तम रिवाइज भी हेइ जिवो पिला माने। एवं तमरा कोन कहूची तमरा जो अछि कोन द कहउचन जे पिला माने नुआ क्वेश्चन भी तमरा प्रैक्टिस हेइ जिवो। ठीक अच्छे। तो एथि सहित पिला माने आ कालक्षेपण प्रक्रिया अवलंबन न करी आरंभ करिया पिला माने आजिर क्वेश्चन आंसर। ठीक अच्छे पिला माने, यस यू आर रेडी। तो चलो स्टार्ट करिया आजिर क्वेश्चन आंसर। ठीक अच्छे पिला माने, प्रथम क्वेश्चन चलो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन। ओके तो पिला माने प्रथम मते को कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी फोकस on the role of imitation, emphasize the role of the learner in constructing his own view of the world. Now emphasizes on memorizing information and testing through recall. Okay. तो कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी पिला माने से पचारछि
कौन करे से पिला माने ओके आंसर आसलानी पिला माने ओके ऑप्शन बी दैट इज emphasizes the role of the learner constructing कौन his own view of the world ओके पिला माने बहुत बढ़िया आंसर करेक्ट आंसर होची पिला माने तमरो कौन ऑप्शन बी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने ऑप्शन बी बा हमें लिख कोई परिया ऑप्शन 2 एम्फसाइज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज ए प्रोसेस क्या करो पिला माने आंसर करिया कोन देची देखो इट कॉजेज ए पर्सन टू मूव टुवर्ड्स ए गोल इट सैटिस्फाइज द पर्सन्स बायोलॉजिकल नीड्स इट हेल्प्स इन अचीविंग ए साइकोलॉजिकल एम्बिशन ना इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन which not appropriate to motivation पिला माने not appropriate to motivation पिला माने कौन हबो कहलो एठी पिला ने कौन आंसर हबो रे एठी तमर आंसर जो पिला माने ऑप्शन 4 हैला ऑप्शन 4 से कौन देछि कहलो स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट पिला माने नॉट एप्रोप्रिएट देछि ना हैला नै तो इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशन बोल से देछि ओके बी कहूचो इट सैटिस्फाइज वन द पर्सन्स बायोलॉजिक ओके देखो कोडा कोडा ठीक हबो देखो पिला माने 1 टा ठीक हबो 3 टा ठीक हबो बाकी 2 एंड 4 भीतर रहला पिला माने आंसर तो आंसर मोस्ट प्रोबेबली तमरा हो पिला माने तमरा हबो कोन ऑप्शन 2 टा ही हबो लाइक satisfy the person's biological needs हबो पिला नंबर आंसर हैला नॉट एप्रोप्रिएट देछि ना तो नॉट एप्रोप्रिएट हबो तमर पिला माने ऑप्शन 2 टा हबो ठीक अछि ने ओके नेक्स्ट देखिए पिला माने ए चाइल्ड राइट्स विथ हिज हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स इट ही सी शुड बी ता कोन करे कर पिला माने डिस्करेज्ड मेड टू राइट विथ द लेफ्ट हैंड allow his preference ना send to seek medical help कौन हबो को जल्दी ऑप्शन ए को 1 2 3 4 भीतर कौन हबो रे पिला माने ऑप्शन सुनील कहउचंदी सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प तुम दबो पिला माने कोन ऑप्शन सी हबो रे पिला माने दैट इज allow his preference हला तो से जहाँ लिमजी लिखुची लिखु तमे ताकू कहबो हलै नै नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड कोडा ओडे पिला माने गिफ्टेड रो साइन नुह द एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस ओके देखो से कोन देछि देखो से देछि पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी पोर रिलेशनशिप विथ पीयर्स ना इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग तो साइन नुह पिला माने देछि गिफ्टेड रो कोन हबो कहलो क्वेश्चन नंबर 4 पिला 1 2 3 आंसर दिया हला ऑप्शन 1 2 3 देछि ना तो आर आंसर कोन हो पिला माने आंसर हो पिला माने ऑप्शन 3 दैट इज कोन पोर रिलेशनशिप विथ पीयर्स हला ही नहीं तापर देखो लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर कहलो लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर इमेजिनेटिव थिंकिंग सर 4 नंबर टे बुझे दियंतु 4 नंबर कोन देछि रे which of the following is not a sign of से दिछि प्लान देखो गिफ्टेड बोले को पिला माने रे प्लान देखो गिफ्टेड बोले प्लान जो मानकर कोन भल पाठ होतो से माने एक्स्ट्रा करिकुलर एवं एक्स्ट्रा करिकुलर फील्ड रे से माने कोन थिबे भल परफॉर्मेंस दे परथुवे ठीक अछि तांगर कोन थिबो क्यूरियोसिटी थिबो पिला माने कि से जानिया पे शिक्षा पे तांग भीतर अंतर्निहित इच्छा बोले थिबो सेला क्रिएटिविटी ए सॉरी सेला क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी अर्थ होछि पिला माने गोटे समस्या पिला माने निज वे रे गोटे यूनिक तरीका रे से माने सेला सॉल्व करि परथुवे सेला क्रिएटिविटी देन दिज इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग जो से माने जानियर इच्छा थिबो पिला माने से माने तांकर करिकुलम माने जहा पढिया कथा ता सहित पिला माने एक्स्ट्रा रीडिंग पाई भी से माने निज तरफ रु कोन करिवे आग्रह देखेबे किंतु से ऑप्शन 3 दिज पिला माने पोर रिलेशनशिप विथ पीयर्स माने तमरो सांग साथी मान सहित तार संपर्क खराब थिबो ये पिला माने तमरो साइन नो कार गिफ्टेड साइन नुह बा लक्षण नुह ठीक अछि सेति पई एठी तमर आंसर हो पिला माने ऑप्शन 3 टा होई दबो हबो तमर आंसर हैला नेक्स्ट देखो लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर कोन हबो कहला पिला माने इमेजिनेटिव थिंकिंग कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग
एसोसिएटिव थिंकिंग ना परसेप्चुअल थिंकिंग बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने मन रख ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कही पार पिला माने एनी कमेंट्स एनी कमेंट पिला माने कहला 5 नंबर आंसर 5 नंबर क्वेश्चन आंसर दिया पिला माने इमेजिनेटिव थिंकिंग कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एसोसिएटिव थिंकिंग ना परसेप्चुअल थिंकिंग तो प्राय मन रख लैंग्वेज ऑफ वर्ड माने कोठी पाई माने ये दरकार नहीं पिला माने भाषा दरकार नहीं यस करेक्ट आंसर हवा पिला माने तमरा ऑप्शन ए आंसर आछी पिला माने आउ के आंसर दवा चाहू कि कमेंट कर रे पिला माने हैला कि नहीं जहाँ भी लागू तुम आंसर ठीक हम कमेंट करो एवं सेशन को पिला माने लाइक करो जो माने भी देखुछ ओके और कैरेक्टर पिलाने किए इंडिकेट करे देखो ग्रोथ डेवलपमेंट लर्निंग ना एनवायरनमेंट पिला मन रख ये क्वेश्चन पिला आंसर हम मन रख कन्फ्यूजन हो पारे मन रख ये क्वेश्चन आंसर हम डेवलपमेंट ठीक अच्छे कि नहीं डेवलपमेंट ठीक अच्छे तो ग्रोथ पिला हूँ फिजिकल है कि नहीं हुई लर्निंग कौच which indicates change in the quality or character of a child okay learning भी ही पर जे indicates the change in the okay quality change in character or change in behavior हाँ ही परियो learning माने कौन रे पिला माने learning माने होच तमरा it is the permanent modification of behavior ठीक अछि learning माने कोन permanent modification of behavior तो learning ता बेसी माने कोन more appropriate होची हैला ठीक अछि नेक्स्ट देखो सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय के दिथिले को सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के दिथिले ए क्वेश्चन पिला मन तमर इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर एवं मल्टीपल कोन मल्टीपल इंटेलिजेंस भी के दिथिले ए दिला ही तमर पिला माने तमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अछि त को तमर सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय किए पिला आंसर करो ट्राए करो ऑप्शन देखो से कौन देइछि ऑप्शन देखो पिला से कौन देइछि कौन देइछि पिला माने ऑप्शन से देइछि पिला माने अल्फ्रेड बिनेट थॉर्नडाइक फ्रीमैन ना नन ऑफ दिस सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के दिथिले ये हो पिला मन तमरो ऑप्शन ए दैट इज अल्फ्रेड बिनेट ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये क्वेश्चन पिला माने आगुरो आसी जिबी हला एडा मन रखि तो हला नै 8 नंबर आंसर केन हो पिला माने हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये क्वेश्चन पिला तमरो भूल हबा कथा नो बीएड एंट्रेंस दो जाउचो हला 10 दिन पर लिटरली 10 दिन पर एग्जाम दबो ये क्वेश्चन आंसर पिला तुम कमेंट कर पारिबा कथा को हु इज द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अरे एडे एडे यूट्यूबर सब वीडियो कर देखु ना का वीडियो भी टीचिंग एप्टीट्यूड वीडियो कि देखु ना कार भी को जल्दी को आंसर कमेंट करो ऑप्शन कौन हम 1 गार्डनर 2 भाइगस्की 3 ब्रूनर ना 4 पियाजे आर आंसर पिला माने ऑप्शन 1 गार्डनर ठीक अछि नेक्स्ट देखो पिला माने who gives more stress to the philosophy of social constructivism social constructivism को पिलाने बेसी स्ट्रेस किए दउथिले हैला ये पिला मन तमरा मन रख भाइगस्की हैला नै भाइगस्की देथिले अच्छा पिलाने आउट क्वेश्चन पचारछि द कांसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग के देथिले हैला ऑप्शन होछि सेम ई जाते ऑप्शन अछि हैला के पियाजे कोलबर्ग भाइगस्की डिवी हैला नै तो कांसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग के देथिले हैला मते कमेंट करी जणेबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पिला ने क्वेश्चन नंबर 10 इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कोथरे पिला डिफर करंती प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट
ना जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट कोथरे पिला माने से माने कोन करंती डिफर करंती कमेंट करि परिबो पिला माने हला आंसर कोन होबे आंसर ऑफ पिला माने तमरो रेट ऑफ डेवलपमेंट ठीक अछि प्रिंसिपल समान फॉलो करिवे किंतु रेट कोन होबो इंडिविजुअल को इंडिविजुअल वेरी करिवो ठीक अछि नेक्स्ट देखो द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12 year old चाइल्ड इज तो 12 वर्षर पिला गोटे 12 वर्षर पिला जदि बेस्ट प्लेस कौन हम तार सोशल डेवलपमेंट बा सामाजिक विकास में कौन हम रे पिला माने ये तुम पिला मन रख प्लेग्राउंड है प्लेग्राउंड रे पिला कौन हम तार सोशल डेवलपमेंट हो पार ठीक अच्छे पिला बुझीपार ओके नेक्स्ट देख पिला सिलेक्ट द select the educable group of students from the following groups indicating different IQ levels तो पिला डिफरेंट IQ लेवल देछि पिला एजुकेबल बोले जहाँ को शिक्षित करा जाय परिबो जहाँ को शिक्षा जाय परिबो किछि से तार IQ लेवल केते होइतो दरकार पिला माने मन रखो समान IQ लेवल होइतो दरकार 50 रु 70 IQ लेवल केते रु केते होइतो दरकार 50 रु 70 हलाइनी IQ लेवल रो IQ काढियार पिला फार्मूला कोन मा बाई का इंटू 100 है कि नहीं मा बाई का इंटू 100 बोले कौन मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 है फॉर्मूला नेक्स्ट देखो पिला IQ scores are generally dash correlated with academic performance तो 13 नंबर पिला आंसर हम मन रख हाईली कोरिलेटेड विथ एकेडमिक परफॉर्मेंस है तापर देखो नेचर ऑफ चिल्ड्रेन इज लाइक इमिटेटिव कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेटिव ना डिस्ट्रक्टिव कौन हम कहले पिला मन रख नेचर ऑफ चाइल्ड हो पिला इमिटेटिव है इमिटेटिव है नेक्स्ट देखो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट ये सब गुड़ा पॉइंट भितर पिला मल्टीपल इंटेलिजेंस कौड़ा कहूनी बोली से पचार पिला तो कहल कौड़ा से कहूनी ये पिला तुम कौटा कहूनी जान ये कहूँ ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन कहूनी जान ना ये कहूनी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ तमाने तुम ऑप्शन 4 पिला आंसर ठीक अच्छे आगू बढ़िया देख गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर कौन हम कहल गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर टीचर्स ना इंट्रोवर्ट इन नेचर कौन हम कहला पिला आर आंसर हम पिला तुम ना डी हेनी आर आंसर हम पिला ऑप्शन 2 दैट इज इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट है नेक्स्ट देखो द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन आर लर्नर बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय लिविंग बोथ 1 and 2 ना नन ऑफ दिस कौन हम पिला कहल तो मन रख पिला द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन होची लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग तो मैंने ये कौन हम बोथ 1 and 2 ताहले कौन ऑप्शन 3 हो पिला तुम करेक्ट आंसर हो ठीक सेमती क्वेश्चन नंबर 18 देखा पिला क्वेश्चन नंबर 18 देख डैश इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज पर्सनालिटी इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड ना एप्टीट्यूड ये प्लान बढ़िया क्वेश्चन ये है आंसर कहल कौन हम तो मन रख पिला आर आंसर हो तुम ऑप्शन 2 दैट इज इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस रे पिला द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज इज बुझीपारे आंसर कौन हबार इंटेलिजेंस हम है ओके ठीक सरला पिला तार आंसर हम कौन ऑप्शन 2 पिला इंटेलिजेंस ठीक अच्छे एप्टीट्यूड हेनी इंटेलिजेंस हम है देन पिला देख क्वेश्चन नंबर 19 देख पिला क्वेश्चन नंबर 19 देख कौन देती एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस एडोलेसेंट छुआ मैंने भर कौन पे से कौन एक्सपीरियंस करें कौन हम कहल फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फीलिंग ऑफ
ପିଲାମାନେ ହେବ କହିଲ? 19 କ'ଣ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଫିୟର ଆବାଉଟ୍ ସିନ୍ସ କମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍? ନାଇଁ ହେଲା କି ନାଇଁ? କ'ଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ସେ ପଚାରିছে ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପଚାରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ହେଲା କି ନାଇଁ? ହେଲା, କ'ଣ ହେବ କୁହ? କ'ଣ ହେବ କୁହ ଆନ୍ସର? ଇଏ ହେବ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ, ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ 2, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଜୀବନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆସିପାରେ। କ'ଣ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ? ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆସିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଟିକେ ରୁହ, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଅପସନ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି? 3ରେ ଅଛି କି? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେବ 3, ହେଲା। ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ କନସର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ, ହେଲା। ତ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆଂସିୟସ୍ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ନାହିଁ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ବି କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି? ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥିବେ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଇଟା ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଟିନେଜ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ହଁ, ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଶିଖିବ ନା, ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, helping learners recapitulate or recall what they have already learned is important because କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ? ନା relating new information to prior knowledge enhance learning, ଅପସନ୍ 2 ହେବ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, every learner is unique means that କ'ଣ ହେବ କହିଲା ପିଲାମାନେ? 21ର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। 21ର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସହଜ ହେଇଥିବ। No two learners are alike in their abilities, interest or talents, ନା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ? 21ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21ଟା ପିଲାମାନେ ଇଜି ଅଛି, ହେଲା। କୁହ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21ର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ୟେସ୍, ଆର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1, that is no two learners are alike in their abilities, interest and talents, ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସେପ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ୍ ନା ସୋସିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? हेलो, ओके, तो कमेंट करो पिलाने कौन हम क्वेश्चन नंबर 22 आम कर बर्तमान। क्वेश्चन नंबर 22 पे आंसर कौन हम कमेंट करो। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल ना सोशल कौन हम रे पिला माने? क्वेश्चन नंबर 22 तो मन रख पिला डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन प्राइमरीली पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ऑप्शन 2 हम पिला माने हमर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो पिला माने द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग एज, वाह ये भी पिला बहुत बड़ा क्वेश्चन। रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग कौन कौन हो पिला माने? सिंबल, सेमांटिक्स, मैन और चाइल्ड, तो कौन हम पहला आंसर आ रहा? सिंबल्स, सेमांटिक्स, मैन और चाइल्ड, कौन होगा पिला माने? मन रखो, सिंबल्स,
मैथमेटिक्स मैन और चाइल्ड कौन हम पिला मन रख आंसर हमारा ऑप्शन 1 दैट इज सिंबल्स आंसर हमारा ऑप्शन 1 दैट इज सिंबल्स ओके आगु बढ़िया पिला माने क्वेश्चन नंबर 24 को व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्रोमोसोम जीन फर्टिलाइज्ड सेल ना जाइगोट क्वेश्चन नंबर 24 को व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्रोमोसोम जीन फर्टिलाइज्ड सेल ना जाइगोट ओके ता पिला माने क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हबो ओके ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हबो ऑप्शन 2 फाइन मोटर स्किल पिला माने देखो मोटर स्किल दि प्रकार गोटे हला तमर फाइन मोटर स्किल आ गोटे हला तमर पिला माने कोन ग्रोस मोटर स्किल हला कि नै तो को कोन हबो फाइन मोटर स्किल कोड हबो कहले थ्रू एडी जिंस कॉमन जिंस पिला माने आंसर कोन हबो आरो आंसर हबो ऑप्शन 4 दैट इज राइटिंग ही पारे राइटिंग पेंटिंग हला एडा हबो तमर कोन फाइन मोटर स्किल हला तापर देखो डैश इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज to the chronological age multiplied by 100 ए टिके आगर कहथिली पिला माने एटा कोन हेउस तमरो कोन आईक्यू आईक्यू रो फुल फॉर्म कोन पिला माने इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी हबो पिला माने तमरो ऑप्शन 2 हबो पिला माने तमरो आंसर ठीक अछि नै हे परलो क्लियर हे परलो पिला माने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिया पिला माने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने डेवलपमेंट अच्छा क्वेश्चन नंबर केते 26 सरला 27 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग कोन अब को एडा इजी क्वेश्चन गुडा 27 आंसर कहले पिला माने इजी क्वेश्चन कोन कोन से जी नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग देछि एवं ऑप्शन देछि पिला माने स्किल नॉलेज मैच्योरेशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर कोन हबो को 27 कौन हम कहले आंसर which of the following is not a product of learning skill knowledge maturation ये जानछ हला केते आसले तमर हला कि नै ये सरला पिला हमर प्रैक्टिस सेट 1 सरला अब हमें करिया कोन प्रैक्टिस सेट 2 करिया पिला माने हला कि नै
प्रैक्टिस सेट 2 करवा एवं जो मैंने नुआ देखुं पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु है कि नहीं सब सब्सक्राइबर बढ़ुना अच्छा स्टैग्नेंट है कि नहीं स्टैग्नेंट है ओके चलो पिला स्टार्ट करो प्रैक्टिस सेट 2 पिला फर्स्ट क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 years ए चाइल्ड लर्न्स बेस्ट केमती पिला शिखे पिलाड़ी by using his sense, by comprehending neutral words, by thinking in an abstract fashion, ना by applying newly acquired knowledge of language. कौन हम कहले इजी क्वेश्चन दे पिला है एटा तुम जब कह आम जानू बोले कौन आम कर किसी कहीहबनी है 1 नंबर आंसर जल्दी समस्ते कमेंट कर 1 नंबर आंसर पिला समस्ते कमेंट कर कौन हम जन्मरू 2 वर्ष भितर पिला केमिति शिखे बाय यूजिंग सेंसेस बाय कंप्रेहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन ना बाय अप्लाइंग कहला जसुस विजय से कहते भाई अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज तुम गाँव में 2 वर्षर छुआ भाषा कहूँ भाषा आ शिखिकी से कथा कह से अप्लाई कर दूसरी बाय अप्लाइंग न्यू एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वाओ एडवांसिटी को पिला आंसर कौन हम और आंसर पिला ऑप्शन 1 दैट इज बाय यूजिंग सेंसेस बाय यूजिंग सेंसेस है कि पिला जमी केमी कहल से तुम डिब्बी नहीं थोदेव से जान कौन डिब्बी लगी है कि नहीं से गोटे हाथ मारिदेव गरम लगे कष्ट हम से लगे बुझल कि नहीं तो चाइल्ड केमी लर्न कर पिला बाय यूजिंग द सेंसेस है कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देख इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर नोइंग कौन आम जापर पिला कहल इंडिविजुअल डिफरेंस मेंटल रिटार्डेशन एजुकेशनल बैकवर्डनेस ना ऑल ऑफ द एबव को आंसर ऑप्शन कौन हम कहल ऑप्शन 1 2 3 4 कौन हम कह समस्ते कमेंट कर जो मैंने देखुच समस्ते समस्ते कमेंट कर है आंसर ठीक हो भूल हो पर कथा कमेंट समस्ते करार अच्छी है कर कौन हम इंडिविजुअल डिफरेंस मेंटल रिटार्डेशन एजुकेशनल बैकवर्डनेस ना ऑल ऑफ दिस तो पिला आर आंसर कौन हम आर आंसर पिला ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन 4 हो पिला आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटीज क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज कौन हम कहल जब कौन कर इंडिविजुअल पिला कैपेसिटी क्वांटिटेटिवली आम कौन कर इनक्रीज करचे है दिस शुड बी टर्म्ड एज कौन हम कहल पिला कौन हम ये हम पिला तुम डेवलपमेंट है कि नहीं डेवलपमेंट है डेवलपमेंट हम पिला ठीक अच्छे तापर देखिए पिला क्वेश्चन नंबर 4 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन पचार पिला क्लासरूम स्कूल सोसाइटी होम यही टाइप क्वेश्चन पिला करवा कथा कहल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन कौट सरुची बोली से पचार इवन द लर्निंग इज कौन कहल माने कौन और लर्निंग 2 प्रकार ना फॉर्मल कौन दी फॉर्मल नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल 3 प्रकार अच्छी ना तो मन रख पिला फंडामेंटली कंप्लीटेड इन कौटू पाठ पढ़ा सरला बोली कौन पिला स्कूल ना तो यह हम पिला कौन क्लासरूम है नहीं तापर देख इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड कौ स्टेज पिला पिलाटा स्वार्थपर हो इवन द ह्यूमन्स आर सेल्फिश बाय नेचर तो पता कौ स्टेज पिला चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड मन पिला आंसर हम अर्ली चाइल्डहुड है कि नहीं नेक्स्ट देख प्राइमरी एजुकेशन हेल्प्स प्राइमरी एजुकेशन कौन पिला हेल्प करे है कौन हेल्प करे पिला ये तो आम हेल्प कर कौन जान ये हम तुम सोशलाइजेशन चाइल्ड हम कौन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड हम इन कोर्स अंडरस्टैंडिंग हम तो पिला क्वेश्चन नंबर 6 आंसर कौन हम ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द एबव है नेक्स्ट देख थ्योरी ऑफ लर्निंग व्हिच टोटली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ लर्निंग किए दबार कॉग्निटिविस्ट कौन कॉग्निटिविस्ट डेवलपमेंटल बिहेवियरिस्ट एवं कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट देख पिला से क्वेश्चन कौन पचार से क्वेश्चन पचार ओनली डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मैंने जो व्यवहार बा बिहेवियर को आम पिला देखिपर
तापर डिपेंड करिवो ताहले आंसर कोन हो पिला माने कहलो क्वेश्चन नंबर 7 रो पिला 7 लिखि करी हाइपेन दियो हैला जो क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर दाउ चाहो पिला माने 7 लिख ने हाइपेन दियो हाइपेन दी करी को लिखो 1 कि 2 कि 3 जहा लिखो लिखो हैला कन्फ्यूजन रहबन तो के कोन कहू जाना पड़नी टू मच ऑफ केओस हैला कि नै तो कोन हो पिला माने कहलो क्वेश्चन देछि कोन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर देछि ना पिला माने ताले मन रखो पिला माने एडी तमर आंसर होई जीवो 7 रो 3 यस आयुसी करेक्ट आंसर हैला बिहेवियरिस्ट हबो तमरो करेक्ट आंसर पिला माने हैला नेक्स्ट देखिया पिला ने क्वेश्चन नंबर 8 देखो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन हैला कि नै हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहला क्वेश्चन नंबर 8 को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी रो पिला ने फादर किए फादर होउचंदी पिला ने आर कि आर फादर होउचंदी पिला ने तमरो पियाजे हैला ने पियाज होउचंदी फादर हेले देन एपिस्टेमोलॉजी गोटे वर्ड आसला पिला ने एपिस्टेमोलॉजी बोले कोन पिला ने कहलो एपिस्टेमोलॉजी बोले होची पिला ने हमर फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ नेचर ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज बुझी पारलो कि नै ओके नेक्स्ट आगु बढ़िया पिला ने क्वेश्चन नंबर 9 देखो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज आकमे केमिति ट्रीट करिया देखइलो क्वेश्चन नंबर 9 रा आंसर देलो कोन हबो को ऑप्शन पढ़ी के पिला आंसर दियो हला आंसर के दबार मेथड भी मु कहि देई छी केमिति दबो हैला कि नै जल्दी जल्दी कमेंट करो यस क्वेश्चन नंबर 8 रो 1 करेक्ट आंसर हैला तापरे पिला माने रहिला तमरो कोन 9 आंसर दियो पिला क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दियो देखा जाउनी क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाउनी अरे लिखि जा पूरा पूरी क्वेश्चन नंबर 9 कि में देखा जाउनी और जूम करिया होडे साइड टिके कटु अरे क्वेश्चन नंबर 9 कथा कोहा होची 9 के मो स्क्रीन तो मु देखुची पूरा पूरी दिसुची मते क्वेश्चन नंबर 9 तो पूरा दिसुची क्वेश्चन नंबर 10 टा दिसुनी 9 तो दिसुची हला देखो कोन देछि पिला ने मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज a hindrance in teaching learning process, a resource for enrichment of school life, a challenge to teachers capacity to motivate students to learn, and a factor that makes school life a complex experience for the learners. कौन हो पिला ने कहलो 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आंसर हो पिला मन हमरो ऑप्शन बी दैट इज ए रिसोर्स फॉर एनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ हैला कि नै करला तापर देखो क्वेश्चन नंबर 10 द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज ए टाइप रो क्वेश्चन नि पिला माने जनरली आसे कंफ्यूज कला टाइप रो हैला कि नै को कोन हो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर पिला ने कोन हो कहलो क्वेश्चन नंबर 10 deep knowledge about subject taught, strict disciplinarian, good rapport with the students, na good motivator कोन हबो को वो टीचर को पिला माने मन रखो सब बड़े भलो मोटिवेटर हेथेउ पड़िबो हला से पिला को मोटिवेट करथेउ पड़िबो हला कि नै तो क्वेश्चन नंबर 10 रा पिला माने आंसर हि जीवो ऑप्शन 4 हला 4 हो पिला माने हमर करेक्ट आंसर हला नेक्स्ट देखो क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम रे क्वेश्चनिंग करिया द्वारा कोन होय कहलो क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर डेवलप्स इन एक्टिविटी इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम ना क्रिएट्स इनडिसिप्लिन कोन हबो कहलो 11 नंबर इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी कमेंट कर दियो क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम कोन हबो को क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर ना डेवलप्स इन एक्टिविटी वेस्टेज ऑफ टाइम ना क्रिएट्स इनडिसिप्लिन कोन हबो क्वेश्चन नंबर पिला माने 11 टाइप करो 11 टाइप करके हाइफेन दियो ऑप्शन ए बी सी डी लिखो 1 सॉरी ऑप्शन 1 2 3 4 जहा लागु टाइप करो एवं सेंड करो कमेंट समस्त करिया दरकार हैला कि नै कोन हो पिला माने ए क्वेश्चन कष्ट लागु छी आंसर कोन हो पिला माने आंसर हो पिला माने तमरो ऑप्शन 1 दैट इज इट क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
Diagnosis of the gaps in the learning of students should be followed by. Diagnosis of gaps of learning of students should be followed by. केमती फॉलो हवा दरकार पिला माने तो मन रख पिला माने याकू कहा होची पिला नंबर appropriate remedial measures है ऑप्शन 1 ऑफ पिला माने तमरा करेक्ट आंसर काहे पिला माने कहलो ए देखो गोटी तुम गोटे जिनस पाठ पढ़ेला पिला गोटे जिनस पाठ पढ़ी सारा पर तुम गोटे टेस्ट कल से टेस्ट देखला पिला माने है टेस्ट देखला पिला माने किसी गोटे पर्टिकुलर टॉपिक गुलो प्राय किसी पिला खराब करछंती से तुम कौन कर पिला तुम कौन कर डायग्नोस्टिक टीचिंग कर डायग्नोसिस कल कि एमती हो तुम आउ पिला पढ़ेल है नहीं बाय टीचिंग को हूँ पिला रेमेडियल टीचिंग भी कहुए है कि नहीं हेल्ले पढ़ला पिला तुम कौन कर ना तुम चेक कर ना सी बुझिले कि नहीं बोली तुम आउ थे टेस्ट भी कर ठीक अच्छे आंसर हो पिला ऑप्शन 1 जहाँ हूँ तुम एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स है नेक्स्ट देख द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज कौन कहल साइकोएनालिटिक कंपैरेटिव मेथड डेवलपमेंट मेथड ना स्टैटिस्टिकल मेथड है कि नहीं 12 नहीं 12 1 हम है 13 देख पिला 13 हम पिला आंसर 3 है 13 हम 3 दैट इज डेवलपमेंट मेथड है तापर देख पिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट करेस्पोंडिंग टू सेफालोकैडुअल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट ये पिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब लगुच एटा एथर आसीपे है ये क्वेश्चन पिला एथर आसीपे है कि नहीं कहीं विड़ीविड़ा होगी अच्छी एसएसबी वाला है कौन कौन पकेबे क्वेश्चन बोलिकी तो एथर एटा ही पकईदेवे है कि नहीं तो आंसर कौन हम पिला जान आर आंसर हम पिला डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट आपको कहे कौन सेफालोकैडुअल बोली कहुए ये हूँ तुम गोटे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट यस आई सी करेक्ट आंसर है कौन हमार आंसर ऑप्शन 1 दैट इज डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Vygotsky proposed that child development is कौन हम कहल ड्यू टू जेनेटिक components of a culture, a product of social interaction, a product of formal education, and a product of assimilation and accommodation. Question number 15 पिला कौन हम कहल क्वेश्चन नंबर 15 ये आंसर आसुची वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 15 आंसर कौन हम पिला क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हम ऑप्शन 2 दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन ऑप्शन बी हम ठीक अच्छे कहीं ये जो थे तुम किए भाइगस्की थे ये तुम थे कौन जड़े सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे बुझल कि नहीं ये कहते पिला सोसाइटी रधिक शिखब अधिक जान बुझीपार कि नहीं बहुत इंपोर्टेंट भाइगस्की है ये तुम ये थे जी कि तुम कनसेप्ट देते कार स्कैफोल्डिंग कनसेप्ट देते है कि नहीं आउ कौन देते पिला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी यही देते कौन देते जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय दिस है कि नहीं अच्छा सरला तापर देखिए पिला नेक्स्ट क्वेश्चन देख ये दीटा शुण दीटा आगुरी पचारि सारी मन अच्छी नहीं स्कैफोल्डिंग विषय पचारि सारी एवं आउटे कौन रहा तुम आउटे कौन कहले पिला गोटे है तो तुम यहाँ कहीदेली स्कैफोल्डिंग आउटे अच्छी कौन तुम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हाँ यस MKO आम कौन कहे मोर नॉलेजेबल अदर बोली कहे सब कनसेप्ट देते तुम किए भाइगस्की देते पे सरला आगू बढ़िया देख गार्डनर फॉर्मुलेटेड ए लिस्ट ऑफ 7 इंटेलिजेंस व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम तो पिला शुण ये कौटा पिला गोटे नुह बोली से पचारि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस देते पिला गार्डनर हावर्ड गार्डनर एम भर गोटे कौड़ा नुह बोली से पचारि पिला तो मन रख से जो इंटेलिजेंस देते पिला इमोशनल इंटेलिजेंस सी अंडर जाऊनी है तो आंसर पिला ऑप्शन 2 स्पेशल जाऊँगी इंटरपर्सनल लिंग्विस्टिक जाऊँगी पिला यस 16 आंसर ही पिला तुम ऑप्शन 2 वेरी गुड बहुत सुंदर आंसर आसुची पिला ये सब क्वेश्चन गुड़ा एटलिस्ट प्रिपेयर होगी जीवा कथा है नेक्स्ट देखिए पिला डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग इज रिलेट टू कौन हम कहला पिला क्वेश्चन नंबर 17 आंसर
कौन हम डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू ऑप्शन हम पिला तुम 3 दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है बोथ हेरिडिटी एनवायरनमेंट इंटरेक्ट ये हेनी पिला ऑप्शन 3 हम पिला कौन मोर एप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट देख पिला which of the following statements cannot be considered as a feature of learning कोटा पिला माने लर्निंग रा फीचर नुह सेटा मते जणाइबो एबे को लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट mediates a behavior okay learning is something that occurs as a result of certain experiences okay study of behavior is learning na unlearning is also a part of learning कोन हबो कहला पिला 18 18 पिला आंसर कौन हम कहल 4 कौच अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग बोली कौच अच्छा देख पिला भल से देख आर आंसर हम पिला ऑप्शन 3 दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग हेनी ऑप्शन 3 हम पिला तुम करेक्ट आंसर देख अनलर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग नहीं तुम जो शिखुच पे तुम भी नहीं तुम नुआ जिन कौन शिखले आरटा भूली जाऊच बुझीपार कि नहीं तुम कौन कर से बिहेवियर टाक मॉडिफाई कर बुझल कि नहीं है लर्निंग इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर लर्निंग इज रिलेटिव कौन लर्निंग इज परमानेंट बिहेवियर चेंज बुझे नहीं चेंज इन बिहेवियर को तुम लर्निंग है बट बिहेवियर स्टडी को पिला कह जाए लर्निंग बोली है सरला नेक्स्ट देख पिला नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टाब्लिश्ड टू नवोदय स्कूल कहीं पिला एस्टाब्लिश कराई कहल एटा तो जानी नवोदय स्कूल हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह भी अच्छी है नहीं कौन हम कह ये अच्छी पिला तुम टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज दैट इज ऑप्शन 2 हम पिला तुम करेक्ट आंसर वेरी गुड है नेक्स्ट देखिए पिला नेक्स्ट क्वेश्चन देख सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर्स टू इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने को सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स रेफर्स टू कहला कौन ऑप्शन देख पिला माने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 एवं ऑप्शन 4 देख आंसर कौन हम यस आंसर पड़ासला वेरी गुड आंसर अच्छी आंसर कौन हम पिला माने ऑप्शन 1 दैट इज देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग है ठीक नेक्स्ट देखिए पिला इंक्लूसिव एजुकेशन ये भी पिला इंपोर्टेंट है नहीं को इंक्लूसिव एजुकेशन का कहवा celebrates diversity in the classroom encourages strict admission procedures includes indoctrination of facts and option 4 पिला माने includes teachers from marginalized groups कौन हम पिला कहला क्वेश्चन नंबर 21 रा आंसर दियो एटा इजी क्वेश्चन पढ़ पिला माने ऑप्शन देखिले ही आंसर आसी जीवा कथा को कौन हम आंसर आरा इजी क्वेश्चन दे पिला माने कहला 21 आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 21 रा आंसर पिला माने कौन हम क्वेश्चन नंबर 21 रा आंसर हम पिला माने कौन ना इंक्लूसिव एजुकेशन पिला माने कौन ना इट सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम दैट इज तमरा आंसर हम पिला माने कौन ऑप्शन 1 हम पिला माने तमरा करेक्ट आंसर है इंक्लूसिव रो अर्थ पिला माने कौन ना गोटे क्लास रे ही तमरा कौन मैंने नॉर्मल स्टूडेंट बा फिजिकली फिट बा फिजिकली नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड कौन डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट मिसिकी पढ़ी पारे से ही आम कौन करवा इनक्लूड करवा आम नॉर्मल क्लासरूम एक्टिविटीज रे ठीक अच्छे नहीं ताकू कह जाए कौन इंक्लूसिव एजुकेशन बोली कह जाए है कि नहीं ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिला इफ ए चाइल्ड राइट्स ये भी पिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन है देखो इफ ए चाइल्ड राइट्स 16 as 61 and gets confused between B and D this is case of visual impairment learning disability mental impairment ना mental retardation कौन हम कहल ये हम तुम पिला गोटे कौन लर्निंग डिसेबिलिटी ऑप्शन 2 हम करेक्ट है
नेक्स्ट देखो, which of the following does not reflect teaching for understanding? yes, ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 23 ର आंसर କୁହ, which of the following does not reflect teaching for understanding? आराम से पिलाମାନେ ऑप्शन पढ़िकी आंसर करो। कौन हम पिलाने कहला 23 ର आंसर कौन हबो? yes पिलाने 23 ର आंसर कौन हबो? ऑप्शन 4, that is enable students to memorize isolated facts and procedures। देखो, which of the following is a feature of progressive education? Which of the following is a feature of progressive education? तो पिलाने आर आंसर कौन हबो? प्रोग्रेसिव एजुकेशन रो फीचर होची पिलाने कौन हबो? आर आंसर हबो कौन पिलाने? प्रोग्रेसिव एजुकेशन रो फीचर कोडा हबो? ये हो पिलाने तमरो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ऑप्शन 4 हो पिलाने तमरो करेक्ट आंसर हैला। आगु बढ़िया, समस्त टिके कमेंट करो। ओके 24 आंसर दियो, 24 आंसर दियो पिलाने 24 रो। ओके आगु बढ़िया, 24 ऑप्शन कौन कहले? आंसर हबो 4 हैला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 25 देखा पिलाने। ए child has been admitted to a school that belongs to a backward family or background from the cultural viewpoint. You will तमे कोन करिवो? कौन करिवो को? ऑप्शन कौन हो पिलाने? ऑप्शन ठीक जीवा ऑप्शन 3, that is you will keep him in a normal class but will make special arrangements for teaching him, keeping his special needs in view। हैला नहीं त माने ऑप्शन 3 हो पिला माने करेक्ट आंसर हैला। नेक्स्ट देखिया पिला माने, नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देखो, क्रिटिकल पेडागोजी फॉर्मली बिलीव्स दैट। ऑप्शन पढ़लो पिला माने कहलो 26 का आंसर दियो कौन हबो? कौन हम प्लान कहलो क्रिटिकल पेडागोजी फॉर्मली बिलीव्ड दैट। कौन हबो हुए कहलो? ये पिला ने बिलीव करे कौन ना द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पोर्टेंट, दैट इज ये तमर ही जो ऑप्शन 3 पिला ही जो तमरा करेक्ट आंसर हैला। तपर देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ए टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चंस द टेस्ट specific testing update he is concerned primarily about the question papers कौन कंटेंट कवरेज, टोपोलॉजी, रिलायबिलिटी ना वैलिडिटी। तो पिला मन रख ये तुम आंसर ही जीव कंटेंट कवरेज हैला, कंटेंट कवरेज हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज पर इंसेप्ट 2005 इज द क्रिएशन ऑफ कौन हम कहला पिला बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंग्लिश ओनली, नन ऑफ दिस। आंसर हो पिला ऑप्शन 2, दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म है। नेक्स्ट देखो, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट, कोटा पिला इवैल्यूएशन पर्पस नहीं। आंसर दाव चेष्टा करो। कौन पिला कहल? yes our answer of pilaman tamara to label the children as slow learners, that is option
2 will be correct answer है। नेक्स्ट देखो MLL अप्रोच MLL ର ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ। MLL ର ପିଲାମାନେ ସେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି MLL ହେଲା କି ନାହିଁ। MLL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? MLL ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ? MLL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ର ପିଲାମାନେ? ନା ମିନିମମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। MLL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଅପସନ୍ 1 ତୁମର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଚୈତନ୍ୟ ଆଜି ଇଭିନିଂ ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଧେ ଆଜି। ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡାଗୋଜି ଫର୍ମାଲି ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା। ତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡାଗୋଜି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡାଗୋଜି? ନେମ୍ କୁହ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡାଗୋଜି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ନା ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କର। ଯେଉଁମାନେ ନା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। କୁହ ହୁ ଗେଭ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡାଗୋଜି? ନା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ନା ଜାଣିନ ବୋଧେ ନାଇଁ? ତ ନା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେଡାଗୋଜି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ପାଉଲୋ ଫ୍ରାଇରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ପାଉଲୋ ଫ୍ରାଇରେ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଶୁଣ ତମେ ନେଇକି ଭାଇଗସ୍କି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭାଇଗସ୍କି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ହେଲା, କୋହଲବର୍ଗ ହେଲା, ଆଉ କିଏ ଅଛି ସ୍କିନର ହେଲା, B.F. ସ୍କିନର ହେଲା। B.F. ସ୍କିନର କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ଥିଲା କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଥିଲା ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ତମର ପାଭଲୋଭ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଲା କି ନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍କିନର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ସ୍କିନର ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ରୋ ଟିକେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? B.F. ସ୍କିନର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ କହିଲ? B.F. ସ୍କିନର ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, B.F. ସ୍କିନର ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହିଲ? ସେ କହୁଥିଲେ କି ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଇଆନ୍ ପାଭଲୋଭ ହେଲା। ଓକେ ତାପରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି ଯିବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଭଲୋଭ ଡଗ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ। କ'ଣ କୁହାହେଲା? ନା କ୍ଲାସିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ B.F. ସ୍କିନର ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ। ସ୍କିନର କାହା ଉପରେ କାମ କଲେ? ସ୍କିନର କହିଲେ ଅପେରାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଲା କି, ଯିଏକି କାମ କରେ କାହା ଉପରେ? ରିୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ନା କାମ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଏଇ ସେସନ୍ରେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେସନ୍କୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା କି ନାହିଁ, କାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 9:30ରେ ପିଲାମାନେ ଅଲସୋ ୟେସ୍ ପ୍ରସାଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ରସାଦ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାଲି ବି ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତମର 9:30 PM ପିଲାମାନେ ଆଉ 60ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଣିବି? ଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧରିକି ଆସିବି କରିବା ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଶା କରିବି କି ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିବ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସେସନ୍ରେ। ଦେଖାନି ତ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ସାର୍ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ନା? ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏକରେ ଏଇଠି ପିଲା କମ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପଢ଼ାଇଲେ କାହାକୁ ମାନେ ପାଠ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏତେ ହେଉନି କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଥ୍ କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ପିଲା ତ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ। ତ ମ୍ୟାଥ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କରିପାରିବା ହେଲା। ବାୟୋଲୋଜି ହେଉ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ,
बायोलोजी केमिस्ट्री एवं टीचिंग एप्टीट्यूड है ये करवा है केमिस्ट्री करिया कहीं केमिस्ट्री हेले जिते केमिस्ट्री हेले सेते भल है कहीं तुमर पर एलटीआर भी केमिस्ट्री क्लास करिया किछि है ओ स्टेट भी अधरे केमिस्ट्री क्लास करवा तो केमिस्ट्री दूर चलो केमिस्ट्री एग्जाम ओरिएंटेड माने कौन केमिस्ट्री एग्जाम ओरिएंटेड माने कौन बुझी पारे केमिस्ट्री कोर केमिस्ट्री एग्जाम +2 ना +3 ना सीपीटी ना आईआईडी एग्जाम केमिस्ट्री एग्जाम को केमिस्ट्री एग्जाम और केमिस्ट्री एग्जाम थिला को कॉलेज रे पढ़ुथलो चैतन्य तो को कॉलेज रे नाइ सर अच्छा देखो अरे देख बीएड एग्जाम गोटे अलग गोटे प्लेलिस्ट कर चैनल प्लेलिस्ट को जो देखो जी केमिस्ट्री क्वेश्चन कराई प्लान से तुम देखी देखो तुम है प्रसाद बोयाणी अच्छा 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 है गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज पीएलबी कॉलेज रे फुल फॉर्म दिए कहबो चैतन्य कोठी अच्छी से कॉलेज पीएलबी के आज इन फुलवाणी अरे पिला पीएलबी मैंने आज इन फुलवाणी की ओके ओके बहुत बढ़िया तो किसी असुविधा नहीं पिलाने है एग्जाम और रहा के कहल देख काली आ गए मुक टेस्ट करवा है शुण मुक टेस्ट टाइम भी मुझे कहीदे है काली पिला से 3:30 करवा है काली से 3:30 पिला करवा है नहीं समस्त रेडी पड़ी है आउ कौन समस्त नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देथिबो है नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देथिबो है नहीं इंग्लिश सिंबल देखो ऑन कर देथिबो जाफल लेगी वीडियो लाइव हेले नोटिफिकेशन जीव टाइम तो कहदेली ऑलरेडी 3:30 बोलिकी है एवं राति पे कौन 9:30 पुणी थे 60टा टी क्वेश्चन करिया है नहीं 60टा टी क्वेश्चन करिया है तापर पिलाने आ कौन एति तो अच्छी पुणी थे काली अनेक सेशन पिलाने कथा ठीक अच्छे आज पाई पिलाने शुभरात्रि थैंक यू।